Hey everyone, how's it going? I hope you're preparing well for your board examinations. That's why I've come up with another video for digital documentation जहाँ पर आपका पूरा revision हो जाएगा इस chapter का. Before we begin the session, I would just like to introduce myself. I am Akash Singh. I graduated from IIT Bombay with a degree in metallurgy. Now my current job relates to creating softwares related to artificial intelligence and NLP. So at any point of time, if you think कोई concept आपका clear नहीं है या फिर आपको कोई और topic का video चाहिए, please completely feel free to comment under any of my videos. I'll be happy to help you there. Again, if you want to contact me, you can connect with me on Instagram with this username. So let's just start with today's session by talking about हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में. सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग स्टाइल्स देखेंगे. व्हाट स्टाइल्स एक्चुअली मीन, आप डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे डालते हो. टेम्पलेट्स का मतलब क्या है आपको अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं बट ऑफ सेम टाइप. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो. व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इंडेक्स होता है आपका. एंड फाइनली मेल मोज. सो इन टोटल देयर आर 5 टॉपिक्स. We'll have a quick revision on those and cover only those जो आपके examination point of view से important है. So let's start off by talking about board examinations. Now we know that CBSE conducts board examination for 10th as well as 12th. Now you can also be pretty sure कि CBSE है तो probably around 30 to 40 subjects के क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं क्योंकि इतने एग्जाम्स होते हैं. सो डू यू थिंक फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम दे क्रिएट अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर? दे डू नॉट. दे जस्ट क्रिएट अ टेम्पलेट जो बार बार वो यूज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट. सो दिस इज वाई डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है. हो सकता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर प्रॉब्ली आप ओपन ऑफिस राइटर यूज़ कर रहे होगे, बट सबके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सबकी फंक्शनैलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है. द ओनली डिफरेंस इज कि एक पेड है और एक फ्री है. सो इनसाइड ए डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारे टाइप ऑफ फॉर्मेट्स मिलते हैं कि फॉन्ट हो सकता है बोल्ड हो. द फॉन्ट कैन बी बोल्ड और इट कैन बी इटैलिक. आपका जो फॉन्ट है वो इंटायरली अलग हो सकता है. फॉन्ट में अंडरलाइनिंग हो सकती है. सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आप कर सकते हो किसी भी फॉन्ट के साथ, किसी भी फॉर्मेट के साथ, आप उसको बोलते हो स्टाइल. इससे आपका जो टेक्स्ट, आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो आपका उसका अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर सकते हो. ऑल्सो इंक्लूड द कलर, राइट. सो इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत ज़्यादा स्टाइल्स ऑफर किए जाते हैं. सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स मेन्यू, जहाँ पर आप देख रहे हो ये नॉर्मल स्टाइल एक होता है. व्हेन यू कैन राइट नॉर्मली. देयर इज अ सबटाइटल स्टाइल which is a bit faded. There is heading 1 which has large font, heading 2 a bit smaller font, title font and so on. So where can you find this styles? So this is MS Word. अगर आप होम टैब पे जाओगे एंड उसके बाद लिटिल लेटर आफ्टर योर अलाइनमेंट यहाँ पर एक आइकन आता है स्टाइल्स का. इफ यू क्लिक ऑन दिस you will get so many options to quickly change the style of your document. So from your board exams point of view, I don't think you will get steps कि आप styles कैसे apply कर सकते हो, but we will quickly look at the advantages of styles कि क्यों styles actually useful होते हैं आपके किसी भी बहुत बड़े document में या फिर छोटा से छोटा document क्यों ना हो. So अगर आपके पास 10 pages का एक document है and आप हर पेज को अलग अलग स्टाइल दे रहे हो, जैसे this is style 1, दिस इज स्टाइल 2. अगर आपको थर्ड पेज पे फिर से स्टाइल 1 डालना होगा तो यू डू नॉट डू ऑल द सेम थिंग्स अगेन. यू कैन सिंपली सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द ऑप्शंस एंड क्विकली अप्लाई इट देयर. सो बेसिकली स्टाइल्स का एक एडवांटेज होता है कि आप कंसिस्टेंटली एक स्टाइल किसी भी पेज पे लगा सकते हो. आपको फिर से फ्रॉम स्क्रैच वो स्टाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड आपका सेम स्टाइल पूरे पेज पे लग जाएगा. सो दिस मीन्स कि आपके जो फॉर्मेटिंग चेंजेस है वो बहुत ईजी हो जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 20
पेजेस का। नाउ एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन पेपर सेट किया, क्वेश्चन का फॉन्ट बोल्ड था एंड उसका साइज था 32, बट नाउ क्वेश्चन द एग्जामिनर वांट्स टू चेंज दिस टू बोल्ड 30। इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम अगर उसने सिर्फ स्टाइल चेंज कर दिया एंड जस्ट मेंशन कर दिया नाउ ऑल द क्वेश्चंस शुड बी ऑफ साइज 30 इंस्टेड ऑफ 32। सो आपका जितने भी चेंजेस है पूरे क्वेश्चन पेपर में विद सिंगल क्लिक आप चेंज कर सकते हो। You can easily change the existing format. So these are the advantages of using styles in a document. Now other advantages कि आप जो appearance है सारे documents में अलग रख सकते हो। So let's look at this Wikipedia page. Now you can notice there are multiple things. जैसे यहाँ पर title है, this is a paragraph, this is an image, subheading. You don't have to remember these, but just recalling them would be enough. आपको एक बार समझ में आ गया कि एक document कैसा दिखता है, then it will be very easy for you to understand the rest of the topic. So these are the components inside a document. Apart from that, there is something known as footer. So इस पेज में footer नहीं है, but footer is generally where आपका जो पेज नंबर लिखा जाता है इतने छोटे से ब्लॉक में नीचे की तरफ, that is known as a footer. Similarly, what is header? जो आपके पेज के सबसे ऊपर आता है, that is called a header. इसके अलावा you have margins on the left hand side and you also have margins on the right hand side. So there are basic concepts of how a document should look like. I hope this part is clear to you. You might have seen multiple web pages. हर web page में, हर document में, आपकी notebooks में, आपके books में, हर जगह आपको एक header दिखाई देता है, एक footer दिखाई देता है, the left margin and the right margin. So why are we studying these parts of a document is because there are multiple types of styles. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द फॉन्ट इटसेल्फ. So these styles are not only related to fonts but also other components of your document. So let's talk about page styles. जैसे हम लोगों ने देखा पेज का पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हो. पेज स्टाइल में आपके लेफ्ट राइट मार्जिन आते हैं, हेडर, फुटर, बॉर्डर्स ऑफ द इमेजेस, बॉर्डर्स ऑफ योर टेबल्स, आपका जो पेज का बैकग्राउंड है. सो करेंटली द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेज इज वाइट. You can change this background to gray for an entire document. It is up to you. But for changing that, you need to change the page style. So ये हम लोगों ने देख लिया पेज की चीज़ें आप कैसे चेंज कर सकते हो. उसके अलावा क्या होता है, आपके पास पैराग्राफ होता है. पैराग्राफ में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो. लेफ्ट इंडेंट होता है कभी कभी. अगर आपका पेज ऐसा है तो द लेफ्ट इंडेंट इन अ पैराग्राफ लुक्स लाइक दिस. ये जो स्पेस है, राइट इंडेंट सिमिलरली लुक्स लाइक आपके राइट हैंड साइड पे स्पेस होगा. टेक्स्ट अलाइनमेंट कहा जाता है इसको. लाइन स्पेसिंग मीन्स दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस होने वाला है. इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 पॉइंट, इट कैन बी 2 पॉइंट्स. सो दे आर, इट इज़ हाउ द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द लाइन्स. सो आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो इन अ पैराग्राफ स्टाइल. नाउ वी कम टू द कैरेक्टर स्टाइल्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. जब हम लोग टेक्स्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट एंड साइज, बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा. नाउ दिस इज क्वाइट कॉमन, यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट बिफोर. फोर्थ इज फ्रेम स्टाइल्स. सो जब आप कभी इमेज डाल रहे हो या फिर आप इमेज के साथ में टेक्स्ट डाल रहे हो, हाउ डज इमेज एंड टेक्स्ट अलाइन विद ईच अदर, उन सब चीज़ों को हम लोग फ्रेम स्टाइल्स बोलते हैं. सो दीज फोर आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट फोर आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इट इज गुड टू रिमेंबर देम. सो नंबरिंग स्टाइल्स, जैसे मैंने यहाँ पर जो नंबरिंग की है, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. नंबरिंग कैन ऑल्सो बी एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. जो ये बुलेट्स आप देख रहे हो छोटे वाले, इट कैन ऑल्सो बी चेंज टू समथिंग एल्स. करेंटली दिस इज अ सर्कल, यू कैन ऑल्सो कीप इट अ स्मॉल स्क्वायर या फिर आप एक एरो भी रख सकते हो. सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू विच कम्स अंडर नंबर स्टाइल्स. इन सम केसेस आपके डॉक्यूमेंट में एक टेबल डाला जा सकता है to reflect some values.
So at that time, you can also change the cell styles. So let's suppose this is your table. So यहाँ पर आप हर एक सेल के अंदर का जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो. इट शुड बी डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. सेल के अंदर जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो राइट अलाइंड है या फिर लेफ्ट अलाइंड है. द बैकग्राउंड ऑफ द सेल, आपको कुछ इमेज चाहिए और शुड इट बी वाइट. एंड सेल प्रोटेक्शन. सो ऑल दिस कम्स अंडर सेल स्टाइल्स. ग्राफिक स्टाइल्स अगेन, जब आपको इमेज के अंदर चेंजेस करने होते हैं, जैसे आपके पास अगर ऐसी इमेज है, लेट्स से दिस इज एन इमेज, यू वांट अ शैडो टू बी ड्रॉप्ड. सो दिस कम्स अंडर ग्राफिक स्टाइल्स. नथिंग टू रिमेंबर, जस्ट टू अंडरस्टैंड. एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल्स. सो एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट्स, कभी कभी आपको फॉन्ट में भी आपको शैडोज चाहिए, फॉन्ट में रिफ्लेक्शन चाहिए. ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन बाय प्रेजेंटेशन स्टाइल्स. सो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू रिमेंबर दीज फोर एटलीस्ट. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ स्टाइल से आप क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकते हो, कैरेक्टर स्टाइल्स में क्या होता है. इफ़ यू वांट टू चेंज द हेडर ऑफ अ पेज, विच स्टाइल शुड यू चेंज. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. नेक्स्ट पार्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज एडिंग अ पिक्चर. नाउ डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है, आप उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें टेबल्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो, आप उसमें लिंक्स डाल सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर added as a feature in Word as well as OpenOffice Writer. So how do you do it? आप Insert tab में जाओगे and you will get this option of clicking on picture. So over here you can see there are multiple ways to add a picture. And सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ways होते हैं. So the first way could be from your computer. आप ऑनलाइन इंटरनेट से पिक्चर डाल सकते हो, या फिर आपके पास वन ड्राइव कनेक्टेड है, आप वहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हो. स्टॉक इमेजेस मीन्स देर इज ऑलरेडी अ मार्केट प्लेस इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, उसके अंदर आपके पास प्ले स्टोर होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास स्टॉक इमेजेस होती हैं. एंड द अदर सिंपल वे इज जस्ट कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉ. आई होप यू नो व्हाट दैट मीन्स. आपने आईसीटी स्किल्स में पढ़ा होगा, राइट. सो इमेज फॉर्मेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अ डॉक्यूमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, this is the border of the document, I hope you can see it. This is the margin of the document, this is the header of the document, and यहाँ पर मैंने image डाली है रोनाल्डो की. Now I want to edit this image. There are multiple options present to me. So for that what I do, I right click on the image, जहाँ पर मुझे एक मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है. Over here I get these options of styles of the image itself. मुझे इमेज को ग्रो करना है या श्रिंक करना है, मे बी आई वॉन्ट टू क्रॉप इट. सो लेट्स ट्राई टू क्रॉप इट. सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रॉप, यू गेट एन ऑप्शन लाइक दिस. यू कैन चेंज द साइज ऑफ द इमेज. यू जस्ट हैव टू ड्रैग दीज. ऐसा एक आपके पास आउटलाइन आ जाएगा, एंड इन ऑर्डर टू resize it, you just need to hold this and drag from one page to another. So this is about image formatting, but the major part which can be asked in your board examinations is something else which we will discuss later. But let's just quickly look at drawing objects also. हम लोगों ने images देख लिया. Similarly drawing objects भी आप insert कर सकते हो. Let's say I want to insert an arrow here inside a document, या फिर मुझे कोई और चीज़ add करनी है which looks like this. So how do we do this? Again, insert menu, you get this dialog box. आप एक या तो draw कर सकते हो या तो insert कर सकते हो. It's completely up to you. Now clicking on shapes, you can choose shapes from these options. कभी कभी आपको अगर flow chart बनाना है, you can insert boxes, then you can insert an arrow, again a box, then an arrow. So these things are made very simple in a text editor, in a document editor. अगर आप देखोगे आपके notebooks, आपकी text books में, वहाँ पर भी यही function use किया जाता है. So later on you can add any of the graphics that you like. उसके बाद भी आप color change कर सकते हो, outline change कर सकते हो, and so on. So this was about drawing objects. Now the main part, कि images में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है. आपने अगर नोटिस किया होगा, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स टू ऐड एन इमेज टू अ डॉक्यूमेंट एंड आपका टेक्स्ट भी अच्छे से अरेंज हो जाए वहाँ पर.
So for that purpose, Microsoft Word provides you with different options. Let's understand all these, what they are. First is text wrapping, which tells you कि आपकी image और आपके text के बीच में क्या relation है. अगर आपकी image लेफ्ट हैंड साइड पे है तो टेक्स्ट उसको कवर कर रहा है या सिर्फ आउटलाइन कर रहा है, ऊपर से जा रहा है या फिर पीछे से जा रहा है. सो दैट्स अंडर टेक्स्ट रैपिंग. एंकरिंग इमेजेस मीन्स कि इमेजेस आप फिक्स कर सकते हो आइदर ऑन द पेज या फिर आप किसी और जगह पे फिक्स कर सकते हो, मे बी एक पैराग्राफ के साथ. सपोज दिस इज योर पैराग्राफ एंड आपने इसके साथ एक इमेज एंकर की है ऑन द टॉप राइट. सो वेर एवर यू मूव दिस पैराग्राफ, आपकी इमेज भी वहाँ मूव होती रहेगी. दैट्स एंकरिंग इमेजेस. अरेंजिंग इमेजेस मीन्स आप कैसे इमेज को स्टैक करते हो एक के ऊपर एक. एंड अलाइनिंग इमेजेस की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. First of all is text wrapping. As I said, it refers to the placement of your text in relation to the graphic. For example, currently my text is over this image, right? ये जो image है इसके ऊपर मेरा text है. It can also be that my image is on the right hand side and my text is on the left. So MS Word provides you many options, many wrapping styles. ये जो जैसे आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं एग्जैक्टली वैसे आप सब चूज कर सकते हो इन योर डॉक्यूमेंट. सो एन एग्जाम्पल वुड बी, लेट्स सी दैट वी हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट. दिस इज टेकन फ्रॉम अ विकिपीडिया पेज. नाउ दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, बट यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट रैप्ड है. दिस इज द इमेज एंड ऑन द राइट हैंड साइड माई टेक्स्ट इज रैप्ड. इट कैन ऑल्सो हैपन कि मेरी इमेज राइट पे, टेक्स्ट लेफ्ट पे. सो all this text wrapping helps you position your image in a better way. यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो what you just need to do, again right click, you get an option of wrap text. You want inline with the text. अगर आपके सेंटेंस ऐसे है एंड आपका इमेज ऐसे आ रहा है साइड पे, दैट इज इनलाइन. स्क्वायर लेफ्ट मीन्स लाइक दिस. स्क्वायर राइट वुड मीन एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज. बिहाइंड द टेक्स्ट मीन्स आपके टेक्स्ट कि पीछे की तरफ इमेज आ रही है विच इज जनरली नॉट विजिबल, और इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. All right, so let's move on to the next part now, which is anchoring. As I said before, there are two things you can anchor an image to, but first of all let's understand the meaning of anchoring. Have you seen a boat or a ship in sea or maybe a river? सो जब बोट को एक जगह फिक्स करना होता है, यू जस्ट ड्रॉप द एंकर, राइट? सो एंकर नीचे पत्थर पे जाके लग जाता है, मे बी लैंड पे जाके फिक्स हो जाता है, एंड योर बोट कैन नॉट मूव एनीवेयर. इफ योर लैंड शिफ्ट्स ओनली देन योर बोट कैन मूव, or maybe you can just remove the anchor. That's a entirely different case, but the example that we took is because right now this image is anchored to this paragraph. Let's say what is the next thing I do. मैंने अगर ये पैराग्राफ मूव करके किसी सेकेंड पेज या थर्ड पेज पे डाल दिया, this image will come along with it, which means that this image is anchored to the paragraph or a frame. Similarly, this image you can say is anchored to the page itself. So a point to be noted is image को आपको हमेशा anchor करना पड़ता है. Maybe it's by default it's page, but you can also mention it कि मैंने एक table create किया है and इसके साथ में मुझे हमेशा एक image चाहिए जहाँ पर भी table जाए, maybe एक paragraph. So that is known as a frame. So again a quick example. ये आपका डॉक्यूमेंट है, दिस इज द टाइटल. नाउ दिस इज योर टेक्स्ट विच इज इन लाइन विद द टेक्स्ट, विच मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो रहा है अदर साइड पे, बट बीच में इमेज है. सो इमेज इज इन द लाइन विद योर टेक्स्ट. सो दिस इज टेक्स्ट रैपिंग, एंड यू कैन ऑल्सो फिक्स दिस इमेज विद दिस पैराग्राफ. So for example, मैंने पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया and I just pasted to the last page. The image will come along with it. So I hope you understand what anchoring means now, fixing the image to something static. So the next topic would be anchoring.
right? Arrangement. So arrangement is nothing but stacking of images one over each other. So अगर आपने कभी cards खेले होंगे, maybe some other game where you have to keep the card one above other. So यहाँ पर आपको अगर एक card की position change करनी है, you can bring it to the front or bring it to the back. However, in card game that does not happen. But in OpenOffice Writer in MS Word, you can shift the position of an image according to other images. Let's say I have an image like this, and I can place another image on top of this. Now if you see, there is an overlap जहाँ पर blue image जो है वो red image के ऊपर आ रही है, and you are not able to see the red image at all. So supposedly, let's say I want to bring this to front. So if I click on that option, what would happen eventually is कि आपकी जो red image है वो ऊपर आ जाएगी, and your blue image will look something like this. So now red image is on top. So accordingly there are multiple options. You can bring an image to front, मतलब सबसे ऊपर आप लेके आ सकते हो. आप एक image पीछे डाल सकते हो when there are multiple images present like this. एक के पीछे एक image है. So this is into the plane of this page. अगर आप सामने से देखोगे it would look something like this. ठीक है. So you can also send the image back, एकदम last में भेज सकते हो, to the background भी भेज सकते हो, to the foreground. All these options are already present. So from your board's perspective, just understand that arrangement refers to the stacking of images over each other. Alright, so the next topic is alignment. As the name suggests, आपने देखा होगा आपका text लेफ्ट अलाइंड होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी आपका टेक्स्ट राइट अलाइंड होता है. समटाइम्स इट इज सेंटर अलाइंड, समटाइम्स इट इज जस्टिफाइड. जस्टिफाइड मीन्स it covers the both the margins. So alignment in case of images also means the exact same thing. आप left, right, center, top, center, bottom कर सकते हो. Whatever the words mean here is the exact thing which you get inside the document writer. So please remember one more thing. These text editors, these document writers depend on something known as what you see is what you get functionality. So you can Google this. Right, so this was all about positioning of images. Now, one of the major uses of text editors, document editors is the use of templates. Let's understand it with an example. So this is the syllabus for IT 402, and this is the syllabus for AI 417. Now if you look a bit closely, you can see some of the things are common here. Just say units, this entire column, sorry row, this part A, this part B, part C, same goes here. सिर्फ the only change we can actually see is inside the topics. ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है अंदर दिए हुए आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर, यूनिट्स कौन से हैं आपके प्रैक्टिकल बुक में, क्या है, सिर्फ ये चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आता है. सो लेट मी आस्क यू वन थिंग. व्हेन यू क्रिएट दीज सिलेबसेस एज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वुड यू क्रिएट द एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्क्रैच? अगर आपको AI 417 का सिलेबस लिखना होगा, यू वोंट क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच. आप स्टार्टिंग से टेबल नहीं डालोगे, फिर पार्ट ए लिखोगे, पार्ट बी, यूनिट्स एंड एवरीथिंग. नो, this is the use of template. Once you have created a document like this, what you can do is you can save it as a template, so that later on you can use the same template but some different text. You can remove these parts and reuse the template by adding some other text. जैसे यहाँ पर IT 402 का template, AI 417 का template same है, which means they are created from a same document. किसी एक document से create होगा. And not only these subjects, but all of the other subjects as well. So simply speaking, template is a model that you can use to create other documents, and all these documents somehow look similar. So in Microsoft Word, you have multiple options available. One is predefined. Predefined mein, let's say you want to send your friends an invite for a house party.
You can use the open house flyer. आपके पास already ये format है. You just need to change the text inside. You can change the image, maybe change the color as well. Rest of the things can stay the same. Or maybe if you want to create your resume, you want to apply for a job later. So आप अंदर की चीज़ें change कर सकते हो, but rest of the format completely stays the same. But sometimes what happens is you want a personalized document. You want to create a custom document for your use later on. So तब आप एक new blank document create कर सकते हो and later on save as a template. तो अगर आप मैंने कुछ नई template बनाई है, for example timetable, it will be reflected here. Okay, so this was about templates. Next thing, again, if you are studying very hard for your board examinations, आपको पता ही होगा फिर आपके बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इंडेक्स पेज? इट टेल्स यू कौन सा टॉपिक बुक के कौन से पेज पे है. सिमिलरली टेबल ऑफ कंटेंट्स does the same job. It's just that it is not called index, it's just called table of contents. So it looks like this. You have seen this before. Nothing to explain there, but it should be always easy to read and always accurate. It should be properly formatted. आपके सबसे बड़े headings ऊपर आते हैं, फिर smaller headings नीचे आते हैं, sub headings. Again, it should be numbered properly. इसकी सब numbering भी correct होनी चाहिए. And it is provided right after the title or the copyright page. Generally third या fourth page होता है ये. So inside a document writer, you don't have to type it on yourself. आपके पास already एक option होता है. Once you have created the document, you can just add the table of contents to any document, and this is automatic. Talking about hierarchy of headings, hierarchy मतलब जैसे आपकी यह heading 1 है, this is the main heading. It exactly looks like first आपका एक chapter आता है, chapter में आपका topic 1, then sub topic 1. I'm just doing this randomly. हो सकता है same order ना हो, same hierarchy ना हो, it can be something else. Subtopic, then some bullet points, then comes topic 2, then maybe bullet points. So आपका जो भी hierarchy है, जो सबसे top से लेके सबसे bottom of the content पे जाता है, that should be right. So that's known as hierarchy of headings. Accordingly इसका जो font का size है वो भी change होता है. This would be bigger than the subheading. So this is what hierarchy of headings looks like. Now mail merge is a very important topic from this chapter, and it also occurs in e-spreadsheet for a bit. So mail merge, simply speaking, there are two documents and you kind of add them together to create a new document. This is what mail merge is. Now what these two documents are, एक में आपका data source होता है and एक आपका main document होता है. So आप main document में कुछ जगहें blank छोड़ देते हो. There are blanks inside the main document which are filled from the data present in this document. जैसे मैंने यहाँ से data लिया, यहाँ fill किया, and then a new document is created. So why is this mail merge used and why is it called mail merge? क्योंकि जब दो document आप combine करते हो, it is generally useful जब आपको बहुत सारे लोगों को mail send करना हो, या फिर email send करना हो, greeting send करना हो, दिवाली wishes send करना हो. So it enables you to send bulk emails to multiple people at the same time by automating the process. Nothing is manual. You just need document 1, document 2 and mail merge. आपके बहुत सारे documents create हो सकते हैं just by one click. So template file, also known as main file. As you see, यहाँ पर क्या क्या data missing है? First name, last name, address, zip code, first name. So now where can this data be taken from? This can be taken from data source. Also guys, please remember, you need to understand what data source is and what the main document is. There can be a question, what are the two important aspects of mail merge? How does mail merge work? So at that point of time, you need to remember this, that mail merge is used to combine two documents.
सो लेटर ऑन आफ्टर योर फिनिश्ड डॉक्यूमेंट इज क्रिएटिंग, आप उसको ईमेल कर सकते हो और मे बी प्रिंट इट आउट एंड सेंड इट वाया मेल. द बेनिफिट्स एज वी डिस्कस्ड, आप मास मेल्स क्रिएट कर सकते हो एंड चेंजेस भी बहुत इजीली बना सकते हो. अगर आपको प्रोबेबली 10 लाख ईमेल सेंड करने इन अ डे, आप हर एक मेल पे जाके चेंज नहीं करोगे. यू जस्ट हैव टू चेंज आइदर इन द डेटा सोर्स और in the template file or the main file. So with this, we are done with today's session for digital documentation. It is not a very difficult concept to understand, but just remember, first of all, mail merge, it is important. Take some examples, solve a few questions. Second would be image wrapping or text wrapping, whatever you call it. थर्ड वुड बी स्टाइल्स. अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ट्राई टू रिमेंबर दीज सो दैट यू कैन probably expect a few questions from these topics. So I hope you were able to understand these topics. Please press the like button. You can share it among your IT402 friends. I'll be coming up with another video for eSpreadsheet RDBMS for your revision purpose. So till then, stay awesome.